So the next is injectables. Examples are Depo-Provera. Nobody will ask you in NEET examination what are the examples of the injectables. बस ऐसे लिखवा रहा हूँ मजे के लिए. DMPA, Depot, Medroxy, Progesterone, Acetate. ये भी एक लिख लो इसका एग्जाम्पल. नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द इंजेक्टेबल इज, ये पूछा जाएगा नीट में, that they are taken subcutaneously, injected subcutaneously. The works by ABC, as I told you. कुछ भी पूछा जाए, IUDs पूछा जाए, इंजेक्टेबल्स पूछा जाए, या emergencies contraceptive पूछा जाए, जिसका भी हो ABC. What was A? Making uterus implant unfit for implantation. What was B? Yes, tell me. Altering or increasing the mucus mass in cervix zone. And what was C? That was by preventing ovulation. So that was injectables. The next is contraceptive pills. Now the contraceptive pills, the first is steroidal pills. Mark is important in it. In steroidal pills there are two types. First is mini pill. The second is combined pill. Now mini pill is also called as POP, that is progesterone only pill. And the combined pill has the combination of progesterone plus estradiol in Russian. Just kidding. So the progesterone or mini pill, the progesterone only pill POP is very effective. Example, Mala D. Important. जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं मार्क करता रहूँगा, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं था, डेपोट रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिडेट, मज़े के लिए बता देता हूँ, अच्छा लगता है सुनने में, बायो है, इंटरेस्टिंग तो है. सो द नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट, प्रोलॉन्ग्ड कंजम्पशन of steroidal pills may causes breast cancer. Important. Now third is emergency contraceptive pills. These are also called as morning after pills. Important. They should be steroidal, because steroidal pills are very effective, and
The condition of emergency contraceptive pill is they should be consumed within 72 hours of unprotected sexual intercourse. Bracket, the important line is best effect with 24 hours. Within 24 hours. The examples of morning after pills are, we all know, unwanted 72, unwanted 48, eye pills. Next is emergency contraceptive IUDs. The key point is, star mark this, they should be what? To increase effectiveness, they should be steroidal. They should be steroidal oblique hormonal. And the condition of every emergency contraceptive is they should be implanted within 72 hours. And they should be, whatever you will take, emergency contraceptive pills or IUDs, the condition is they should be implanted within the 72 hours. They should be implanted within 72 hours of unprotected sexual intercourse. The examples of emergencies IUDs. Can you tell me? You can tell me. मैंने कहा they should be steroidal और hormonal, और मैंने hormonal कहाँ लिखवाया था? Hormonal का example क्या था? LNG-20. So the example of emergency IUDs is LNG-20. Next is non-steroidal pills. Non-steroidal pills. The best example and the best pill is Saheli. Underline. Very important. ये नहीं important है जो अब लिख रहा हूँ. Developed by CDRI. जीके में आ सकता है. Central Drug Research Institute, Lucknow. Now, the working of Saheli. Very, very important. It contains centchromin chemical. Important. It contains consumed weekly after consuming twice a week for 2 months or 3 months. कोई नहीं पूछेगा. नहीं याद करना, छोड़ देना. बस वर्किंग थी, याद कर लो. सहेली एक पिल है. इसमें क्या पूछा जाएगा मैं बता देता हूं. अगर कुछ इतना ज्यादा लग रहा है, कुछ मत याद करो. नॉन स्टेरॉइडल पिल का एग्जांपल सहेली,
क्या केमिकल है? सेंट क्रोमिन, बस। अब इसके फंक्शंस देख लो, मतलब वर्किंग ऑफ सहेली, ये पूछा सकता है। हाउ सहेली वर्क्स? फर्स्ट इज इट tries to block estradiol Russian just receptors, estradiol receptors. Second, retards, अगर किसी की भी, चलो एक फैक्ट बताता हूँ, किसी की भी वर्किंग पूछी जाए, किसी की भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, हमेशा दिमाग में ABC याद रखना, जो मैंने पहले लिखवा दी है, इसमें भी वही लिख दो, बस एक ये नहीं आता, बाकी वही है, इसमें भी लिख दो। प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, रिटार्ड्स मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, फैगोसाइटोसिस, सब कुछ लिख सकते हो। रिटार्ड्स मूवमेंट ऑफ जोना पेल्यूसिडा, थर्ड चैप्टर पढ़ा है तो पता होगा कैसे। एंड इंक्रीजेस ciliary movement of cilia of fallopian tube. Now this is important. अगर बीटिंग मूवमेंट ऑफ सीलिया और fallopian tube अगर इंक्रीज हो जाएगा तो there are high chances of damage of ova. If the movement of cilia is increased in fallopian tube, then there are very high chances of damage of ova. So these are the working of Saheli. Next is एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो बता रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट है, वही ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में 60 क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो जो कहा इंपॉर्टेंट है, और कुछ अगर नहीं भी समझ आए, मैंने कहा दिया कि व्हाट इज, कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा है, जैसे DMP वाला एक्स्ट्रा था, छोड़ दो। 60 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 60 के 60 हो जाएंगे, गारंटी देता हूँ, गारंटी। सो व्हाट इज MTP? It is medical termination of pregnancy. MTP is legalized, NCRT लिखता है इसलिए लिख रहा हूँ, in India in 1971, 19 with some strict norms. Now important difference देखो, MTP is safe, difference अब देखना, safe up to 12 weeks of pregnancy, and इसको भी important मार्क करो, MTP is allowed, यहाँ सेफ है, यहाँ अलाउड है, is allowed up to 24 weeks of pregnancy. रट लो। So MTPs are done by using chemicals oblique tablets oblique medicines
बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है जो लिखवा रहा हूँ, मज़े के लिए लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है। सो एग्जाम्पल ऑफ टैबलेट्स यूज्ड, कोई नहीं पूछेगा, मेडिकल कॉलेज पूछ जाओ, मेडिकल कॉलेज में पढ़ लोगे। रशियन 486, मज़े के लिए पढ़ा रहा हूँ, नॉट इम्पॉर्टेंट। रशियन 486, कुछ ज़्यादा ही मज़े लेने हैं तो इसकी सॉल्ट्स भी याद कर लो। कंटेन्स मिफप्रिस्टोन, mifepristone. Now, pristone masks the action of progesterone. Progesterone की तरह behave करेगा, and we also know progesterone is useful in contraception. High level of progesterone is used in contraception. So, mifepristone and the pristone marks the action of progesterone, and it also contains Russian 486 also contains prostaglandins. Now, if you recall the chapter 22 of 11th class, the prostaglandins and mediates the inflammation, pain, and fever. So the prostaglandins E. There are 5 classes of prostaglandins. मेडिकल कॉलेज में 5 पढ़ाई जाएगी, अभी इसको रट लो, प्रोस्टाग्लैंडिन्स ई। और इसका फंक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है यूट्रस को, कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस। अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? टू एनहांस स्क्रैपिंग, और स्क्रैपिंग होगी तो लेस चांसेस ऑफ इम्प्लांटेशन, एनहांस स्क्रैपिंग। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मजे के लिए पढ़ा रहा हूं। दूसरा मेथड देख लो अगर एमटीपी का, DNC क्यूरिटेज, सिजेरियन है, अबॉर्शन डन मैकेनिकली। एनसीईआरटी का डाटा है, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी लिखता है क्योंकि, इसको रट लो। डाटा है, डाटा में मैं कुछ नहीं कर सकता। एमटीपी, सॉरी, about 45 to 50 millions of MTPs are done all over the world, which counts 1/5 of pregnancy attained. Yes. Now let us familiar with some terms. Art, ART, art. It is assisted art, assisted reproductive technique. Now what that means, assisted means it helps to overcome infertility. So the couples which are not able to, if the couple is not able to produce offspring within the span of 2 years, they are said to be infertile. एनसीईआरटी लिखता है, लिख लो तुम भी। If a couple is not able to produce offspring within a span of 2 years, then the couples
are said to be sterile. Now, in these couples, ART is recommended. Now, several forms of ART.